Jai Guruji. Last week we read chapter 26 of Rudra Samhita part 3. In this we read that after Lord Vishnu, Lord Brahma and all the other gods, they convinced Lord Shiva to marry Parvati and went back to their respective abodes. Shiva wanted to test the penance of Parvati. He wanted to see her, and on the pretext of testing her penance, he assumed the form of a very old ascetic with matted hair, and he went to the place where Parvati was performing penance. Now Parvati, when she saw the ascetic, she was overjoyed and she worshipped this ascetic and then asked him who he was and why he was there. So to that, the ascetic told her that he was an old soul, an intelligent ascetic who was bestowing happiness on others. And then he asked Parvati that who she was, why was she present in a forest, and what was the purpose of her penance. To this, Parvati told him the story about her being the daughter of Himachala, and in her previous lifetime she being Sati, daughter of Daksha, and in both lifetimes she had lost Shiva, and this time she was performing penance, and even the severe penance could not help her attain Lord Shiva. So she was going to consign herself to fire, but she waited when she saw this ascetic approach. So as she said that, she jumped into the fire, and despite repeatedly being forbidden by the ascetic, she did that. But because of her power of penance, the fire cooled down and it was like a sandal paste, so it could not burn her. Now this ascetic, he again asked her that you should clarify who you are and who you want for your husband, and what is that you desire through this penance. So Parvati then called her maid Vijaya, who was also her friend, and told her to tell the ascetic about her story. And Vijaya, because she was very close to Parvati, she told the ascetic the entire story of Parvati. But the ascetic, who was Lord Shiva, wanted to hear it from Parvati's mouth, so he told Parvati that she should speak up, and then Parvati began to speak. Today we will read further chapter 27, which is the description of fraudulent words of the Brahmacharin. Today Urvashi auntie will be reading in English and Jyotsna auntie will be reading in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji, Anantam Shukrana for this seva. Chapter 27. Description of the fraudulent words of the Brahmacharin. Parvati said, O great Brahmin, listen to my story entirely. What my friend has said just now is the whole truth, not otherwise. I am telling you the truth and not a lie. Shiva has been wooed by me by mind, speech and action, as well as by means of ascetic feelings. I know that it is an inaccessible object. How can I attain it? Still out of my eagerness I am performing this penance. Brahma said. After saying these words to him, the daughter of the mountain kept quiet. On hearing the words of Parvati, the Brahmin said, So long I had been desirous of knowing what our gentle lady craves for, that she performs this great penance. O dear lady, I have now known it through your own words. I am now going away from this place. You can do as you please. What should be done by you is not mentioned by me. To me, your further friendship is useless, but this should be mentioned that your future should be happy. Brahma said. After saying these words to her, when he proposed to go, Goddess Parvati bowed to and spoke to the Brahmin. Parvati said, O excellent Brahmin, why do you go? Stay and tender me wholesome advice. When she said thus, the staff-bearing Brahmin stopped and spoke. The Brahmin said, If you are stopping me with devotion, truly desirous of hearing, then I shall explain everything, whereby you may gain some wisdom. I know Shiva through and through, with all his weighty attributes. I shall tell you the truth. Listen with attention. The great Lord is bull-bannered, his body is smeared with ashes, his hair is matted, he is clad in the hide of a tiger. He has covered his body with the hide of an elephant. He holds the skull. Serpents twine around his limbs,
Poison has left a mark on his neck. He eats even forbidden stuffs. He has odd eyes and is definitely awful. His birth and pedigree cannot be traced. He is devoid of the enjoyment of a householder. He has 10 arms, he is mostly naked, and is ever accompanied by ghosts and goblins. What is the reason whereby you wish him to be your husband? O gentle lady, where has your wisdom gone? Think well and tell me. A previous terrible activity of his has been heard by me. If you are interested in hearing, I shall tell you. Daksha's daughter, the chaste lady Sati, wooed Vrishabhavana Shiva as her husband. Fortunately, their union was well known. Sati was discarded by Daksha because she was the wife of the skull-bearing Shiva. Shiva too was assured in the allocation of shares in the sacrifice. On account of the insult, Sati was infuriated and she discarded her dear life. Shiva too was abandoned by her. You are a jewel among women. Your father is the king of all mountains. Why do you crave for a husband like this, and that too by means of a severe penance? Handing over a gold coin, you wish to buy a piece of glass. Setting aside the pure sandal paste, you wish to smear mud over your body. Unmindful of the sunlight, you wish to have the light of the glowworm. Throwing away the fine china silk, you wish to wear the hide. Discarding the life at home, you yearn for a life in the forest. O madam, throwing away excellent treasure, you wish a piece of iron in return. Leaving off the guardians of the quarters, you run after Shiva. This is not well said. It is against the conventions of the world. Wear you with eyes like the petals of a lotus. Wear this three-eyed creature Shiva. You are moon-faced, while Shiva is five-faced. On your head the divine plaited hair shines with glossy splendor like a serpent, but Shiva has only the matted hair to boost off. Sandal paste is applied on your body, while the ashes of the funeral pyre on that of Shiva. Wear your silken garment and wear the elephant hide of Shiva. Wear the divine ornaments and wear the serpents of Shiva. Wear the deities that move about and wear Shiva, fond of goblins and their oblations. Wear the pleasing sound of his tabor, wear his peculiar drum called Damru. Wear the set of fine drums and the inauspicious sound of his horn. Wear the inauspicious sound of double drum and wear the sound of his throat. There is no matching beauty between you both. If he had money to spare, how could he have been a naked being? His vehicle is a bull. He has no other appendages. There is not even a single quality in the odd-eyed Shiva out of the innumerable qualities pleasing to women and expected in bridegrooms. Your friend Kama was burnt by Shiva. He insulted you also by leaving you off and going elsewhere. His caste is not recognized. He has no learning or wisdom. His assistants are the ghosts. Poison is seen even in his throat. He also moves about in isolation. He is detached from everything particularly, hence you cannot fix your mind in him. Wear your necklace and wear the garland of skulls that he wears. Wear your rich divine unguent and wear the ash from the funeral pyre that he has on his body. O divine lady, everything concerning you and Shiva, such as form, features, etc., is mutually discordant. I do not like your resolution. You can do whatever you please. You yourself have evolved taste for all bad objects. Turn your mind from him. If not, do whatever you please. Brahma said. On hearing these words of that Brahmin, Parvati said angrily to the Brahmin who discredited Shiva. This concludes chapter 27. Now Josna Aunty will commence Hindi reading. Thank you. Jai Guruji. जय गुरु जी, इस पावन सेवा बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना। अध्याय 27। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए।
मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे प्राप्त कैसे हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में वह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझ में कुछ कहना नहीं है। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बताता हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी ले रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे दिखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष्य भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों का सदा संग करते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक को पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य ही रत्नों में उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा कर रही हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पनी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर तो जटा झूठ बताया जाता है। वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगारंग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्धत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों को दी गई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाथ।
कहाँ ढकाढक शब्द और कहाँ अशुभ गल नाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारी और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी अस्वस्थ है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ कि तुम इस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली।